पिलामाने द मच अवेटेड अवेती ब्रिज कोर्स फॉर क्लास 11 साइंस ऑलरेडी स्टार्ट हो सारानी सो देयर इज अ वेरी गुड न्यूज फॉर यू आउ पिलामाने एई कोर्स रे आमे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स रो बेसिक टॉपिक सब कवर करबा जहाँकि क्लास 11 साइंस रो पाठ बुझिबारे तुमको बहुत हेल्प करिवो तो आ वेट कौन कर वीडियो तल डिस्क्रिप्शन में जो लिंक अच्छी से क्लिक करके कोर्स पाई रजिस्टर करो ओके लेट्स स्टार्ट टुडेस क्लास सब बेले जरूरी नुहे कि हम पाखे बहुत छोट छोट क्वेश्चन थिले हमें करि परिबा जते बेले क्वेश्चन बहुत बड़ थिबो केमती ताकू प्रॉपर स्क्वायर करबा इट विल बी रियली डिफिकल्ट सेति पे हमें कोन करछु क्वाड्रेटिक फार्मूला डिराइव करछु जोटा कि तमे आराम आगु पढिछो क्वाड्रेटिक फार्मूला काहाकू कहंती कोटा क्वाड्रेटिक फार्मूला x is equal to minus b plus or minus root over of b square minus 4ac plus or divided by minus 2a. root over of b square minus 4ac whole by 2a. whole by 2a ता इटा आसिला को डेरिवेशन तार जानिचो जेमते कंप्लीटिंग स्क्वायर कला तमे से कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड रे ताकू डिराइव करबो कंप्लीटिंग स्क्वायर कोन तला ax स्क्वायर plus bx plus c is equal to 0 तेठी हमें कोन कर देबा नॉर्मल x टर्म पाइबा पई ताकू a रे डिवाइड कर देबा सब को तो x स्क्वायर plus b by a x plus c by a equals to 0 so this implies that जो स्टेप रे जे बुझी पालानी मते सेठी अटकेबो ओके x स्क्वायर plus 2 into x मिली गला हमको फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म कहते आउ गोटे कोन दरकार b by a दरकार बट हमको गोटे 2a भी एठी 2 भी डिवाइड करबार अछि सो सेकंड टर्म हमें कोन पाइलो b by 2a प्लस b स्क्वायर by 4a स्क्वायर त हमको माइनस कोन करबार अछि पुनी गोटे b स्क्वायर by 4a स्क्वायर माइनस करबार अछि प्लस c by a equals to 0 so this implies that exactly completing square method को हम एठी यूज करूछु x plus b by 2a whole square equals to c by a or you can say b square by 4a square minus c by a आगु जदी ऐड करबा हम केते पाइबा b square minus 4ac divided by 4a square yes or no Yes ma'am. okay Yes ma'am. this implies that our square root करो d पट साइड रे बे कौन मिलला हमको x plus b by 2a this equals to plus minus square root of b square minus 4ac आउ 4a square रो square root हेले डायरेक्ट हे गला हमरा तळे 2a okay so this implies that x is equal to minus b by 2a plus minus square root of b square minus 4ac divided by 2a और तक ऐड कर देले हमें डायरेक्ट जो फार्मूला हमरा तक पाइबो minus b plus minus square root of b square minus 4ac divided by 2a so गोटे वैल्यू प्लस रे आसीबा यू प्लस अछि आ गोटे वैल्यू माइनस रे आसीबा रूट जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन न एटा सब आगु पढिछ Yes ma'am. Yes ma'am. नाउ लेट्स मूव Yes, टू ma'am. सम क्वेश्चंस ओके क्वेश्चन देखा कोन अछि द अल्टीट्यूड ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल इज 7 centimeter less than its base if the hypotenuse is 13 centimeter find the other two sides altitude माने गोटे राइट एंगल ट्रायंगल ओके ये राइट एंगल ट्रायंगल हे गला हमरा अभितरे एबीसी राइट एंगल ट्रायंगल हे गला altitude कोटा बेस कोटा हाइपोटेनियस कोटा BC होची base BC base. होची hypotenuse और AB होची altitude ओके मैम AB होची altitude BC होची base और AC होची hypotenuse ओके हां AC होची हाइपोटेनियस AB altitude और BC बेस तो क्वेश्चन ने कोन दीची देखा मते क्वाड्रेटिक इक्वेशन किए फॉर्म करि परिबा कर 2 मिनिट्स टाइम एथरे x कोडा नबा तमे base Base. is x तो altitude केते हबा
x minus 7 x minus 7 ଆଉ hypotenuse केते देइची 13 तबे पाइथागोरस थ्योरम पढिबो yes ma'am x square plus x minus 7 whole square equals to 13 square. So this implies that x square plus x square minus 14x plus 49 equals to 169. This implies that 2x square minus 14x ये right side left side को आसी गले केते हिजबो minus 120 minus equals 120 to 0. x minus 250. X square plus 6s minus 250 equation. X square plus 2x 6x no ma'am मोर की अलगा आछी बोधे. So this implies that अच्छा quadratic equation को empty form रे छाड़ी बनी तादे एटी देखो सबुतरे 2 common जाउची x square minus 7x minus 60 equals to 0 कहार एती के आंसर आसिला ma'am more asla ओके बाकी जी मते कहिला आंसर किए कहिला ना को मैम मैं और असला नहीं मते कि आगुर आंसर टा कहितला मु कोइ कि ना आस्तो आशुतोष तमे भूल कहिला आशुतोष तमे आउ थरे ताकू सॉल्व करके देखा हां मैम ओके x square minus 7x minus t is equal to 0 एबे आकु सॉल्व करके मते जल्दी रूट्स को केते हेई परिबो अदर टू साइड्स को मेथड यूज करिबो ma'am factorization फैक्टराइजेशन बेस जल्दी हबो मैम x is equal to 12. yes x is equal to 12 पर -5 एटी वैल्यू हेई परिबनी it is 12 or -5 but length केतबले -5 हुए नि तुमको से लाइन टाइट लिखिवा को पड़िबो सो तुम्हारा base is equal to 12 centimeter आउ altitude by height is equal to 12 minus 7 5 centimeter हेलो 12 आउ 5 थिले 13 हुए कि नहीं hypotenuse Yes ma'am. ओके एटा गोटे 13 जतबे तमे hypotenuse देखि देला तम मने मने तमर फिक्स हे जाय कथा दीटा 12 आउ 5 होबा जेंति 3 4 5 ओके तो से थ्रू तमे जानि परिबो चेक करि परिबो वेदर तमे आंसर ठीक अछि कि नहीं नेक्स्ट क्वेश्चन देखा a cottage industry produces a certain number of pottery articles in a day okay pottery articles माने माटी रा जो जिंस सब it was observed on a particular day that the cost of production of each article was 3 more than that twice the number of articles produced on that day एठी रहिला तमरा एंटायर क्वेश्चन एटा जे बुझी की कर देला तापरे आउ किछि प्रॉब्लम नाही if the total cost of production on that day was 90 rupees find the number of articles produced and the cost of each article किए एठी से लाइन ता जो मु इंडिकेट कली मते किए कहि परिबो x कोटा नबा कोन x नबा पान लिखाई छी देखो cost of production of each article मैम नंबर ऑफ आर्टिकल्स को x नंबर yes number of articles नबा कारण कोन दीची cost of production is dependent on number of articles so let us take number of articles equals to x आपने कोन दीची sorry for the interruption आपको बढ़िया चला number of articles equals to x okay so cost of production कितने है each article रा 2x plus 3 2x plus 3 yes कौन पे दिया है जी cost of production of each article ये भी बुझी पारी ना बुझिया कुछ चेष्टा करो was 3 more than twice the number of articles तो twice the number of articles 2x है गला plus 3 more that okay तो cost of article one article okay 2x plus 3 so कौन दिला तापरे total cost कितने हबा number of articles into
cost of Cost of one each. article এই जो 2x plus 3 कौन cost of each article देखिए मैंने गोटे article रा cost होची twice the number of article plus 3. So cost of production total cost equals to x into 2x plus 3. This equals to कितने दिया है जी rupees 90. Understood? Yes, ma'am. So this Yes, implies that 2x square plus 3x minus 90 equals to 0. आप रे सॉल्व कर परिबो किछि प्रॉब्लम नहीं. मेन इंपोर्टेंट जिंस होची तुमको क्वाड्रेटिक जेमती से लास्ट लीनियर इक्वेशन रे बहुत इंपोर्टेंट थिला व्हाट प्रॉब्लम को तमे इक्वेशन रे कन्वर्ट करिबा. सिमिलरली क्वाड्रेटिक इक्वेशन रे भी that is the most important thing. You know how to solve quadratic equation. Either तमे factorization method use करो नहले direct quadratic formula. Complete square method use करिबा नाही. It is a total time waste. Complete square method केवल तुमको सिखा जाई छी कोन माने तमे quadratic equation जो बाहर कला quadratic formula केमती बाहर करिबो. Okay, so after that solve करा और मते आंसर को काली रो सब क्वेश्चन रा आंसर बाहर छी linear equation जा जा करा हितला. Yes, ma'am. Okay, no doubts तो आपको बढ़िबा. Next question. Yes, ma'am. ये क्वेश्चन जे सॉल्व कर दबा मु जानि भी से पूरा क्लियर अछि. क्वेश्चन देखा. A train travels 360 kilometer at a uniform speed. तामने distance दे दीची. Now distance is given. Distance is कितने 360 kilometer. If the speed has been 5 kilometer per hour more, it would have taken 1 hour less for the same journey. तो इतरो तमे कौन बुझिलो बीटा केस रे distance सेम अछि. Yes or no? Yes, ma'am. yes, ma'am. Yes, ma'am. So first गोटे यूनिफॉर्म स्पीड रे ट्रेन ट्रैवल करतला हमको से यूनिफॉर्म स्पीड दरकार ट्रेन रा. So let us the first speed of train equals to x kilometer per hour. तो डाटा कोन गिवन अछि हमको टाइम रे चेंजेस अछि कि नाही. Yes. टाइम Yes, रे ma'am. चेंजेस अछि त टाइम रे तबे चेंजेस अछि तब आमे कोन करिबा. फर्स्ट जतबे से x किलोमीटर पर आवर रे ट्रैवल करूतला से केते टाइम रे x किलोमीटर पर आवर मान 360 किलोमीटर ट्रैवल करछि कि मते टाइम कहि परिबा t is equal to 360 by x. yes 360 360 by x hours. Okay, next case को आसा ये फर्स्ट है गला. If the speed has been 5 kilometer per hour more, the new speed is s2 जदी नहीं गली कितने गला x plus 5 kilometer per hour. Yes or no? It would have Yes, taken ma'am. 1 hour less. Distance is same 360 kilometer. Here time is also specified 1 hour less माने कितने रो 1 hour less. ये जो टाइम दिया है जी t1 रो t2 is equal to t1 minus 1. So this is equal to 360 by x minus 1 hour. एबे इक्वेशन केमती पाइबा हम गोटे ही गला t2 360 by x minus 1. आउ गोटे t2 रो वैल्यू केते हबो. Who can tell me? 360 by x plus 360 by x plus 5. Yes. So our equation will be 360 by x plus 5 equals to 360 by x minus 1. आपको जतरे सॉल्व कर दबा तुमको तमा क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जिवो. क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गले तापर तमे ता इजीली सॉल्व कर परिबा वैल्यू स्पीड रा. Yes, ma'am. So आउ फर्दर एक्सटेंड करिबा कि एतिक रेट आप छाडुची एक्स्ट्रा काम तम मैंने कंप्लीट कर दबा. Yes, ma'am. Now Yes, ma'am. let's move to next question. In a class test, the sum of Cephali's marks in mathematics and English is 30. Okay? The maths रे जते मार्क रखिची, English रे जते मार्क रखिची, तारा sum हैला 30. माने से केते पंडित.
मैथ्स और इंग्लिश मिसे की 30 मार्क्स से स्कोर करछि सो लेट अस टेक द मैथ्स मार्क इक्वल्स टू केते x X. तो इंग्लिश रो मार्क केते हि जिबा 30 minus x. 30 minus max. minus x had she got 2 marks more in maths माने मैथ्स रे जदी ताकू आउट 2 मार्क्स एक्स्ट्रा मिली थांता and 3 marks less in English माने 30 minus x minus 3 English रे मिली थांता then the product of their marks would be 210 find her marks in the two subjects okay एबे इक्वेशन के फॉर्म करि परबा जल्दी से फॉर्म करि को इजी सिंपल किछि नै x plus 2 into 27 minus x equals to केते 210 कंप्लीट आगु को बढ़िबा Yes. Yes, ma'am. okay next is nature of roots तमे roots कोन जानि दला गोटे नॉर्मल क्वाड्रेटिक इक्वेशन रे रूट्स कोन जानि छ गोटे क्वाड्रेटिक इक्वेशन जदी गला ax square plus bx plus c is equal to 0 ताले the roots of quadratic equation x equals to minus b plus minus square root of b square minus 4ac by 2a तामे केतेटा केस से रूट रे पाई परिबा फर्स्ट केस होची हमरा if b square minus 4ac is greater than 0 b square minus 4ac greater than 0 हेले what will be the nature of roots के कोई परिबा मते मैम कोन कर हम पाखरे डिफरेंट कंडीशन अछि ओके नेचर ऑफ रूट्स हमें बाहर कर चुके हां x मैम पूर्ण नंबर वास्तव एवं असमान हेबे x is a real number हाँ x is a real number okay ए जो b square minus 4ac आको हमें डिस्क्रिमिनेंट भी कहता हूँ बा b बोली भी डिनोट कैपिटल d बोली भी डिनोट करता हूँ when this b square minus 4ac greater than 0 तो स्क्वायर रूट भितरे कोन हला गोटे पॉजिटिव नंबर पाइलु हमें तो पॉजिटिव नंबर रा स्क्वायर रूट बाहर कले कोन बस ये गोटे रियल नंबर हबा so the roots will be real but not equal so when b square minus 4ac is greater than 0 the roots will be real but not equal next case ko ja when our d is equal to 0 or you can say b square minus 4ac equals to 0 then x will be minus b plus minus 0 square root by 2a yes or no so this Yes, is ma'am. equal Yes, to ma'am. minus b by 2a plus 0 gote minus b by 2a minus 0 बीटा ताले हमको कौन वैल्यू मिलला minus b by 2a and minus b by 2a so when our discriminant equals to 0 the roots are real and equal कौन हला जेतबेले 0 हला real and equal बीटा रूट मिलिबा गोटे रूट मिलि परिबनी त माने कोन बसे गोटे एग्जैक्ट स्क्वायर टर्म ही जिवो so we will get two roots which are equal our real heijibo now let's come to the third case re when our d is less than 0 so when d is less than 0 b square minus 4ac is less than 0 so हमको स्क्वायर रूट भितरे जेतबेले गोटे नेगेटिव नंबर मिले ताले कोन होबा हम स्क्वायर रूट अनरियल नंबर होबा गोटे yes so the roots are not real or unreal एक केस रे हमें कहि पाइबे हम roots are unreal त ये हमें आगु को जाई कि गोटे एक्स्ट्रा चैप्टर रे केस 3 विषय रे डिस्कस करिबा दैट इज कॉम्प्लेक्स नंबर सेतबेले हमें गोटे इमेजिनरी नंबर यूज करिबा गोटे रियल नंबर आ गोटे हमें एते बळे रियल नंबर विषय रे पढिछु
जेतेबेले नेगेटिव आछे सेतेबेले आमे ताकू इमेजिनरी करके यूज करबा एटा कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर रे पढिबा सो हमकु तीनटा कंडीशन मिलिला फर्स्ट if b square minus 4ac is greater than 0 two distinct real roots माने distinct माने अलगा अलगा not equal if b square minus 4ac equals to 0 two equal real roots हमें पाइबा and if b square minus 4ac is less than 0 then no real roots हमको imaginary roots मिलेगा no real roots or you can say we can get imaginary roots imaginary number complex number विषय तमे किछि पढि छ जे Yes, ma'am. no okay so हमें आपको जे कि पढिबा छ 11th class रे पढा so three cases are there distinct and real equal and real and not real let us check the now let us first establish relation between roots and coefficient okay तो बीटा रूट आछि हमें एज्यूम करबा अल्फा एंड बीटा आर टू रूट्स ऑफ आवर रियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 अल्फा बीटा रो वैल्यू केमति बाहर करबा किछुटे जानि छ तमे सम ऑफ रूट्स सम केते Minus b by a. alpha plus beta is equal to minus b by a and product kete alpha beta is equal to C by A. so when alpha and beta are given you can form a quadratic equation very easily Yes, ma'am. so alpha beta when alpha beta given the quadratic equation will be x square minus alpha plus beta into x plus alpha beta equals to 0 yes or no Yes, ma'am. yes so alpha beta दिया है हम इक्वेशन बाहर करि परिबा ए जो क्वेश्चन सब ये तमरा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रे बहुत आसी बट एंट्रेंस एग्जाम रे रूट्स दिया है इक्वेशन फॉर्म करो कि डायरेक्ट सॉल्व माने क्वेश्चन सॉल्व न करी कि भी तमे तारा सम ऑफ प्रोडक्ट बाहर करि परिबा ओके नाउ लेट अस चेक the equations the nature of roots of the equations given Ma'am. ha kuwa Ma'am, आमे जेतलो quadratic equation रे जनरल फॉर्म लेकुछ सेतलो a square plus bh plus c equal to 0 होची आ जेतलो सेटा जेते अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इनटू बीटा ने कन्वर्ट करछ सेतलो माइनस काई होची मैम देखो ये अल्फा प्लस बीटा रा वैल्यू केते माइनस b by a तो x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा into x plus alpha beta में तले करूछु यदि वैल्यू पुट कर दिया कोन हबो x स्क्वायर माइनस ऑफ माइनस b by a into x plus c by a this is equal to 0 तो ये माइनस माइनस कोन हे गला प्लस हे गला हां मैम so this implies that अब यदि सॉल्व कर देला केते हे गला x स्क्वायर plus bx plus c divided by a equals to 0 a टाइप को चलिए ले कौन सी 0 ही रहइबा तो अल्टीमेट में ये इक्वेशन पाई जिबा x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 हैला एबे बुझिएला यस मैम ओके नाउ सम इक्वेशंस आर गिवन एबे मते चेक करी कि कुहा वेदर दिस रूट्स केमती आर नेचर कोन ए रूट्स सब इक्वेशन रा फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स of the following equation nature of roots of the following quadratic equation if the real roots exist find them first bit check karo kuha mate nature of root kon Roots Unreal. unreal roots Yes, ma'am. plus b square minus 4ac is less than 0 Yes, ma'am. okay now let's unreal second bit करो ये है गला हमारा अनरियल रूट्स सेकंड बिट so these are your homeworks check and difference okay आपको चेक करिबा देखिबा
Now let's check this question. Find the value of k for each of the following. Ma'am, please back to the back screen. Okay, ma'am. दिगुड़ा चेक कर दिया मुझे पे मके काहे इतरे जानी लो केमती चेक करिबा. Let's not waste time. Okay, find the value of k for each of the following. k रा value बाहर करो जेमती की equal roots थिबा. Equal roots माने करो b square minus 4ac equal to 0. So this implies that b square केते k square minus 4 into 2 into 3 equals to 0. So this implies that k square is equal to 24. So k कितने? Plus or minus root Plus or over minus 24 root over. Plus or minus 2 root 6. Plus or minus 2 root 6. Okay. Next question. A pole has to be erected at a point on the boundary of a circular park of diameter 30 meters in such a way that the difference of its distances from two diametrically opposite fixed gates A and B on the boundary is 7 meters. Is it possible to do so? If yes, at what distance from the two gates should the pole be erected? Question किए बुझी पारला? आपको डायग्राम ड्रॉ करियाको पड़िबो. केही जाने जे क्वेश्चन बुझी पारिच? Circular park is given. देखो. Circular park is given. Diameter होची केते 13 centimeters. A, B diameter. That A, B रे distance केते देइची 13 meters. मु तुमको हिंट देकी छाड़ीबी तमे एटा सॉल्व करिबो. ओके. तापरे कोन देला 13 meter देला. A pole has to be erected at a point on the boundary of circular park of diameter 13 in a such a way that the difference of its distances from the two diametrically opposite fixed gates A and B on the boundary is 7 meters. The pole, let us take pole ta jemti P रे आमे pole erect कर देलु. Okay. गोटे distance AP अछि आ गोटे BP अछि. एथरो तमे कोन बुझिलो जो पोल रो डायमीटर रो जो डिस्टेंस अछि ता भीतर डिफरेंस होछि केते 7 meter. 7 meter. So let us take माने ता माने कोन AP minus BP is equal to 7 meters. के बुझिला नि आ भीतर एबे को मैम बुझ पारली. Yes, ma'am. हैला क्लियर? हाँ हाँ upon the difference of its distances from the two diametrically opposite fixed gates A and B on the boundary 7 meter. माने आरो A रो distance जेते B रो और B रो distance जेते pole रो ता भीतरे difference होची 7 meter. माने AP minus BP is equal to 7 meter. Okay, so let us take BP is equal to x meters. Let us take BP is equal to x meter. ताले AP केते ही जीवा. BP को नहीं गलुआ में x. AP केते AP is equal to 7 plus x. आओ तमे जानी चो गोटे डायमीटर ऊपर जो ट्रायंगल ड्रॉ करा है जी. ये एंगल केते हबो 90 degree. 90 degree. 90 degree. तो आप पाखरे ये BP भी अच्छी. So BP square plus AP square equals to AB square हबा कि नहीं? Yes, ma'am. Yes, ma'am. हमको ये जो पॉइंट है क्वेश्चन रे लिखिबा को पड़िबो सेटा 90 डिग्री हबा बोली. Okay, so this implies that x square plus x plus 7 whole square equals to 13 square. एबे तो तुमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गला. एबे आराम से सॉल्व हो जिबा. Yes ma'am. सॉल्व होबा कि नहीं तमे क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कला परे जानिबा. जदी
तमरा d less than 0 इजबा ताले सॉल्व होई परिबनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाहर करिबो चेक करिबो d less than 0 कि नहीं तापरे सॉल्व करिया को चेष्टा करिबो जदि d 0 आउ greater than 0 इदिबा then you can get solutions but if d is less than 0 ताले हमरा unreal solution हबो तमे बाहर करि परिबानी so complete this question also okay तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन विषय हम सब पढ़ी देलु so जहा जहा पढ़िलु the summary is given here हमें जहा पढ़िलु हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन केते बेले हबो a should not be equals to 0 जेते बेले रियल नंबर अल्फा को हमें रूट केते बेले कहबा क्वाड्रेटिक इक्वेशन रा ax² + bx + c is equal to 0 if से अल्फा रा वैल्यू हमें x जगह रे पुट कले जदी आंसर हमको 0 मिलुतबा then the zeros of the quadratic polynomial and the roots of the quadratic equation same बोली जानलु तो जो जगह रे बाय चांस जदी क्वेश्चन रे पचार थिबा roots of quadratic equation न करके zeros मागी थिबा ताले भी सेम आंसर तुमको बाहर करिवार अछि then बीटा मेथड हम जानलु केमते सॉल्यूशन करिवा फैक्टराइजेशन मेथड आउ कंप्लीट स्क्वायर मेथड आउ क्वाड्रेटिक फार्मूला बाहर कलु then नेचर ऑफ रूट्स भी देखिलु आ जदी रूट्स आर प्रोवाइडेड केमती हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म भी करि परिबा ता विषय भी जानिबो सो दिस इज ऑल फॉर टुडेस क्लास एनी डाउट No, ma'am. No, ma'am. then let's meet in the next class